Hello everyone. Note down this question. There is a spring of force constant K and a block of mass M is attached to the free end. This end of the spring is connected to the rigid support and this end is connected to the free end. And this mass is connected to the free end. And right now, the whole setup is at the natural length. This is a natural length. Somebody is holding this. The moment he releases the block, just imagine you are holding a block and you release it. The instant you release it, it comes down, and what you found is this, that after falling a distance of x, you found that the block was at rest over here. You dropped it, it comes down, over here you found it at rest. Question is, find out x. It's a very good question. It will explain many things, and this is something which will also see during oscillations. So, very good and important example. Try to answer as many things as you can in this. Even if you answer them wrongly, you will learn something. Write down the question. A block of mass M is released from the natural length as shown in the figure. Find out deformation in the spring after block deformation in the spring when block is at rest. Find out deformation in the spring when block is at rest. Let's see if you can answer this question.
Look over here. Now let's show this block as a dot. This is your block as a dot. Right now it is at the natural length. This is the natural length. You can see the block as a dot. Downward force on the block is what? mg. Natural length means there is no deformation in the spring and therefore there is no restoring force. When this thing is found over here, same thing, हमने इसको स्ट्रेच करके यहाँ दिखा दिया है साइड में. This force is mg. And the force which is present in the spring because of deformation the force which is present in the spring. Now tell me, what is it? What should I write? Kx or minus kx? What should I write? Mention this in the comment box. A force after a deformation of x over here, is it kx or is it minus of kx? Well, both versions are correct. Both versions are correct. But right now, this is more correct. Although everybody is writing minus kx. I said it's correct. But this is more correct. Why? What is the meaning of negative sign? Negative sign tells you restoring sense. That if you have a deformation, then negative sign tells us that if deformation is downwards, then restoring force will be what? Upwards, which you can see with the help of this arrow. So I have shown you direction of restoring force, and therefore I am giving you only what? Magnitude. So this F equals to kx. When I write it, it is giving you what? Magnitude. You can write minus kx, but then what kind of problem will you face? वो भी देखेंगे. अभी के लिए ये kx है और ये mg है. अब what I am saying is कि यहाँ पर ये बॉडी किस पर है? रेस्ट पर. और अगर रेस्ट पर है, then my question is, can I say mg is kx? So first of all, let's talk about negative sign. बॉडी रेस्ट पर है, इसका मतलब नेट फोर्स क्या होना चाहिए था? 0. This should be equal to this, which is coming from mg equals to kx, which is something like this. 10 equals to 10. 10 equals to 10 type of thing.
अगर आप इसको माइनस के एक्स बोल रहे होते तो फिर आप क्या बोल रहे होते? तब आप बोलते कि भैया 10 is minus of 10. If you show this force as what? Minus of kx, then things are correct, but then you need to remember that this kx is the magnitude. So this is 10 magnitude wise, this is 10. If net force is 0, then 10 equals to 10 is more correct. 10 equals to minus 10 is not at all correct. Hopefully ये चीज क्लियर हो गई होगी कि हमने क्यों इस kx को प्रिफर किया है इस माइनस kx से. जब हम दिखाते हैं कि स्प्रिंग फोर्स इज माइनस kx, तो याद रखना this negative sign, it simply tells you that it is a restoring force. और वो अपने को दिख रहा है यहां पर डायरेक्शन वाइज. अब this was about taking proper sign. My question is, we have the idea of proper sign and all. Body is at rest. If body is at rest, then can I say mg equals to kx, which in just 5 seconds gets me the value of x as mg divided by k. At the lowest point of its drop, the body is at rest. Right here, can I write mg equals to kx? Is this thing correct? Are you satisfied with this? Yes or no? Mention this in the comment box. No, not a single answer is correct. One of the responses that x is not dimensionally correct. It is. Verify and you will find that x is dimensionally correct. The other response is that x is a variable thing, it's changing. Yes, x is changing, but right here, when body is at rest, suppose you found some value of x. So right at this lowest point, we are using the value of x. X is something which is changing, definitely. But over here, at the lowest point, it has certain value, and we are using that value only. So my argument is that my argument is for this part, and this mg equals to kx, you are using mg equals to kx because question says कि जो body है वो lowest point पर rest पर है. This is not correct. Why? I'll give you a simple example और आपको चीज समझ में आएगी. ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बॉडी रेस्ट पर है, उनके दिमाग में आता है कि नेट फोर्स क्या हो गया, 0. I'll ask you a simple question. आपने एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली थ्रो किया ऊपर. Take an object, take a stone, take a duster, take anything, throw it up. At the highest point, its velocity is 0. At the highest point, this object is at rest, but is force on the
body 0 at the highest point? Write down yes or no in the comment box. Visualize and answer. I'm asking you a simple question. आपके पास एक पत्थर है, आपने फेंका उसको ऊपर, हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी 0 है, क्या फोर्स भी 0 है? गुड, फोर्स 0 नहीं है. फोर्स कितना है? mg. जब आप इसे ऊपर की तरफ थ्रो करते हो, हाईएस्ट पॉइंट पर जब ये पहुंचा, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है? 0. लेकिन फोर्स 0 नहीं है. कितना लग रहा है? mg. दैट मीन्स जो हाईएस्ट पॉइंट था, बॉडी रेस्ट पर थी, बट नेट फोर्स वाज नॉट 0. नाउ लुक एट दिस. You all can see this marker in my hand right now. What is net force on the marker? You can see the marker is at rest. What is net force on the marker? Write down the answer in the comment box. What do you think is the net force on this marker? Is it 0 or is it non-zero? Mention this way. This marker is at rest. What is net force on it? You guys are confused, that means. Many of you are answering non-zero. Do you see this marker moving in any direction? हम ऐसे पूछते हैं अपने आप से. मैंने बोला इस मार्कर पर अभी कितना फोर्स लग रहा है. आप लोगों ने बोला नॉन जीरो. नॉन जीरो का मतलब क्या होता है? अगर किसी बॉडी पर फोर्स प्रेजेंट है, बॉडी क्या करेगी? मूव इन द डायरेक्शन ऑफ दैट नेट फोर्स. बट यू डोंट सी दिस बॉडी, दिस मार्कर मूविंग इन एनी डायरेक्शन. लेकिन बॉडी किस पर है? रेस्ट पर. रेस्ट पर है, नेट फोर्स कितना है? 0. लेकिन इफ आई थ्रो दिस अप एट द हाईएस्ट पॉइंट, इट इज एट रेस्ट. और आपने सही आंसर दिया था कि हाईएस्ट पॉइंट पर नेट फोर्स 0 नहीं है. नाउ आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. There is a difference between this rest and the rest which you get when you throw it up. And the difference is this rest और the rest जब हमने मार्कर को ऊपर थ्रो किया था, ये स्पेशल टाइप के रेस्ट हैं. These are called instantaneous rest. Instantaneous rest. Just for an instant, if you throw it just for an instant, this marker comes to rest and then immediately it starts coming down. Because of what? Because of the force which is present on it. That is what is mg. Same thing happens with this. As it falls down, right here, it is at an instantaneous rest. And immediately it will bounce back up and start doing what? I told you, oscillations, oscillatory motion. तो ये नीचे आएगा, रुकेगा, थोड़े से टाइम के लिए, immediately ऊपर चला जाएगा. This is called instantaneous rest. क्यों ये एक इंस्टेंट के लिए हो पाता है? क्योंकि फोर्स लग रहा है और वो बॉडी को कहां ले जाएगा? अपने डायरेक्शन में. What about this rest? This is called permanent rest. This marker is not moving at all. It has no tendency to move. इस पर gravity mg लगा रही है और मेरा हाथ ऊपर की तरफ normal reaction. And that normal reaction is balancing mg, making total force 0, which is called what? Permanent rest. What type of rest is it? Instantaneous. तो जब बॉडी इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर होती है, तब उस पर टोटल फोर्स 0 नहीं होता. हमने क्या किया? हमने बोला कि ये फोर्स और ये फोर्स दोनों इक्वल हो जाएंगे. बॉडी किस पर है? रेस्ट पर. लेकिन हमने ये नहीं सोचा
कि रेस्ट किस तरह का है, इंस्टेंटेनियस है या फिर परमानेंट रेस्ट. First tell me, do you understand the difference between instantaneous and permanent rest? Yes or no? Write down this in the comment box first. The difference between instantaneous and permanent rest. Good. Note down this much, make a cross, and then we'll write a statement. Write down the statement. When an object is at instantaneous rest, when an object is at instantaneous rest, net force cannot be zero. Net force on it cannot be zero. Net force on an object is zero. Net force on an object is zero only if it is at permanent rest. Net force on an object is zero only if it is at permanent rest. And that was the reason we could not use this logic. अब यहां पर क्या चीज बनी थी इसको भी समझेंगे. एंड इस लेक्चर को नोट्स एंड इफ यू विश यू कैन आस्क फॉर द रिकॉर्डिंग ऑल्सो. ऑसिलेशंस तक याद रखना है इसके कॉन्सेप्ट्स को. It will give you the idea of force, energy, restoring force, all these things. And it's a very good and beautiful example. देखना यहां पर क्या प्रोसेस चल रही थी. This is the natural length position. I will write a few values here. उससे आपको आइडिया लगता रहेगा. केयरफुली देखना जरा यहां. ये अपनी नेचुरल लेंथ है. थोड़ी देर के लिए मान लो दैट बॉडी जो है अपनी mg, let's say mg is 4. So let's take it 3. वैल्यूज जल्दी से बन जाएंगी अपने लिए. Take mg as 3. Right now this is at the natural length. इस पर नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है 3. जो ऊपर की तरफ फोर्स है, I hope you can see the arrow. This is mg. This force is the spring force, which is 0.
Why is it 0? क्योंकि अभी हम कहां पर हैं? नेचुरल लेंथ पर. ये वाला जो एरो है क्या दिखाएगा आपको? स्प्रिंग फोर्स. ये दिखाएगा mg. And you just release it from this. इस जगह पर इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी थी वो अभी कितनी है? 0 है. वेलोसिटी 0 है. What is F total right here? तो टोटल फोर्स है यहां पर is 3. This is 3, this is 0. And what is the direction of net force? Downwards. This arrow is giving you the direction of net force. Hopefully समझ में आ रहा होगा क्या बनाया हुआ है. mg you can see mg, restoring force, initial moment and therefore velocity is 0, F total. अब किसी बॉडी पर अगर नेट फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड्स और बॉडी अभी रेस्ट पर है, फोर्स नीचे है, तो बॉडी कहां जाएगी? नीचे. ये थोड़ी देर बाद यहां आ गया. जब ये यहां आया तो mg तो अभी भी कितना लगेगा? 3 mg. लेकिन यहां से यहां आने में स्प्रिंग डिफॉर्म हो गई है, थोड़ी खिंच गई है स्प्रिंग. उसकी वजह से एक स्प्रिंग फोर्स डेवलप हो गया एंड दैट स्प्रिंग फोर्स इज 2. पहले कुछ आया होगा 1 फिर 2, हमने 2 ले लिया है. What is this? Because of this much deformation. Right here, let's say object has developed some velocity and say that velocity is 5 meters per second. और ये किधर होगी? Downwards. 3, 2. Net force 3, 2. Net force कितना हो गया? 1. And is still what? Downwards. 3, 2. यहां पर 0 था, नीचे आते आते वेलोसिटी कितनी हो चुकी है? 5. नेट फोर्स कितना रह गया? 3, 2, 1. नाउ थोड़ी देर बाद ये यहां पर आएगा. अब यहां क्या हुआ? नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है 3 और जो स्प्रिंग फोर्स है ये भी बढ़कर कितना हो गया? 3. डिफॉर्मेशन की वजह से 3, 3. What is net force? 3 cancels this 3 and therefore net force is now what? 0. Now look here. What is net force? 3, then it becomes what? 1 and then it becomes 0. Force is decreasing. So I'm asking you a question. If force is decreasing, velocity, will it increase or decrease? Mention this in the comment box first. You can see that force is continuously decreasing. As this thing deforms, because of that deformation, spring force increases. Spring force was 0, then it became 2, then it became 3, continuously increasing. Right here, total force is becoming what? 0. So I'm asking you that if force is decreasing, what happens to velocity? Does it increase or decrease? बहुत सही. Good. Correct answer. फोर्स जब कम हो रहा है तो लोगों को लगता है कि वेलोसिटी भी कम होगी. नहीं, इसकी वेलोसिटी लगातार क्या होगी? इंक्रीज. जब ये यहां पहुंचेगा, तुमने बोला कि v इंक्रीज होकर सपोज कितना हो गया? 8 downwards. Now, क्यों इंक्रीज होगी? You can imagine yourself. आपके पास एक बॉडी है and body is moving in this direction. आपने उस पर फोर्स लगाया. फोर्स लगाओगे किस डायरेक्शन में, ये चीज इंपॉर्टेंट है. फोर्स कहां लगाया? डाउनवर्ड्स. बॉडी कहां मूव कर रही है? डाउनवर्ड्स. If force and velocity are both in the same direction,
then magnitude of velocity keeps on increasing. Velocity decrease करने का एक ही तरीका है कि आप जा रहे हो इधर, फोर्स कहाँ लगा दो, in the opposite direction. केवल तभी आप v को क्या कर सकते हो, डिक्रीज. हमारे पूरे यहां से यहां तक के पार्ट में फोर्स v के डायरेक्शन में है. इसलिए although force is decreasing, but magnitude of velocity will keep on increasing, which in itself is an objective question coming from kinematics. You can write down the statement also. Just write down the statement. If a force is acting on the body, when I say force, total force, make it total force. If total force is acting on a body, such that its magnitude is decreasing, such that its magnitude is decreasing, then it doesn't mean that speed of the object should decrease. Speed मैंने इसलिए बोल दिया because it gives you the magnitude part. Speed of an object can be decreased only if net force, total force is opposite to the direction of velocity. अब आ रहा है काम का पार्ट. इस जगह पर 3 कैंसिल होकर टोटल फोर्स क्या हो गया, 0. आफ्टर दिस आई विल शो दिस ओवर हियर. इसके जो नीचे का पार्ट है मैं यहां दिखा रहा हूं. लगातार एक्स खिसता जा रहा था. जब हम यहां पहुंचे थोड़ा सा इसके नीचे, this is 3. This force, spring force will increase. 0 था, 2 था, 3 and now it becomes 4. जब आप यहां पर हैं, अब आपके पास जो टोटल फोर्स है वो कितना है, 1. And what is the direction? Up. ये 4 क्यों हुआ? How come this is 4? Object over here is moving with some velocity 8 downwards. थोड़ा सा नीचे जाएगा, स्प्रिंग और खिंचेगी तो स्प्रिंग फोर्स बढ़ गया. अब नेट फोर्स कितना हो गया, 1. किधर, अप. नाउ टेल मी राइट हियर, इस जगह पर जो इसकी v थी, that v should be more than 8 or less than 8. Write down this in the comment box. Just after this point, v which is 8, it should be more than 8 or less than 8. Good. Because of net force reversing its direction from down, now net force is up. और हमने लॉजिक क्या डेवलप किया था कि आप जिधर जा रहे हो, नेट फोर्स अगर उसके ऑपोजिट है तो आपकी वेलोसिटी क्या होने लगेगी, डिक्रीज. तो वेलोसिटी अपन ने बोला कि यहां पर कितनी हो गई, डिक्रीज होकर 7. ये क्या थी, 8.
डिक्रीज होकर कितनी हो गई 7, लेकिन अभी भी कहां है, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड्स। होपफुली इतना पार्ट समझ में आया होगा। अब जब आप थोड़ा और नीचे पहुंचोगे तो क्या हो रहा होगा, mg लगा 3 डाउनवर्ड फोर्स, ये चीज बढ़कर हो गई 4 से 5, योर F total is what, 2. what is the direction, up. आप नीचे जा रहे हो, जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो स्प्रिंग डिफॉर्म होती जा रही है, इसलिए रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब नेट फोर्स कितना हो गया है, 2, किस तरफ, ऊपर की तरफ। v नीचे था, फोर्स ऊपर है, वेलोसिटी डिक्रीज होगी, मान लो डिक्रीज होकर हो गई 2। जल्दी से खत्म करना चाहते हैं इसलिए अपन ने 2 कर दिया। किधर, डाउनवर्ड्स। एंड देन हम यहां पहुंचे, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg, ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स हो गया 6। What is net force? Net force is 3. किस तरफ, up, 6 minus 3. नेट ऊपर लग रहा है, बॉडी नीचे जा रही है, वेलोसिटी लगातार कम होते होते v कितना हो गया, 0। ये वो जगह है जिसकी अपने को तलाश है। क्वेश्चन क्या था, जहां पर सबसे नीचे v क्या हो जाए, 0, जहां बॉडी किस पर आ जाए, रेस्ट पर, दिस इज दैट प्लेस। नाउ हमने क्या किया था, हमने जहां बॉडी रेस्ट पर आई थी वहां क्या लिख दिया था, mg equals to kx. Now look here, mg and this is what is kx. kx किससे ज्यादा है, mg से। नेट फोर्स किस तरफ है, ऊपर की तरफ, बॉडी किस पर है, रेस्ट। कैसा रेस्ट, इंस्टेंटेनियस, इसलिए बॉडी इस फोर्स की वजह से इमीडिएटली कहां मूव करने लगेगी, ऊपर की तरफ। Do you understand this much analysis? Yes or no? Fast in the comment box. This is the important part. कि बॉडी कैसे मूव कर रही है। And it is also giving you a very interesting position, an interesting result. Let me see how many of you have understood this. Suppose आपसे पूछा गया होता, what is that position where velocity is maximum? So at the position where velocity is maximum, what do you know about that? How do you define the position where velocity is maximum in terms of total force? Can you answer this? Be careful, be careful. Look at the board, everything is present on the board. कुछ आंसर सही है, देखना भाई। शुरुआत किससे हुई थी, रेस्ट, बॉडी ने नीचे आना शुरू किया, धीरे धीरे वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। क्यों हो रही थी, क्योंकि फोर्स, नेट फोर्स कहां लग रहा था, नीचे। जहां पर जाकर नेट फोर्स क्या हो गया है, 0, उस जगह पर v क्या होगा, मैक्सिमम। इस जगह के बाद जब आप नीचे जाओगे, नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अप। आप कहां जा रहे हो, अभी भी नीचे की तरफ, फोर्स कहां लग रहा है, अप। इमीडिएटली v क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो ऑसिलेशंस में स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कहां पर मैक्सिमम हुआ करता है, जहां पर टोटल फोर्स क्या होता है, 0। एंड इट्स नॉट अबाउट ऑसिलेशंस। आप बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, जब तक आप एक्सेलरेट करोगे v क्या होगा, इंक्रीज। जैसे आपने ब्रेक लगाया,
v क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज. ब्रेक मीन्स व्हाट? ब्रेक मीन्स कि आपका फोर्स वेलोसिटी के कहां हो गया है, in the opposite direction. So later on we'll solve a question, and for that we'll need this statement. Write down this: the place where total force is zero, the place where total force is zero, velocity of the object will be maximum. The place where total force is zero, magnitude of velocity will be maximum. Suppose आपसे बोला गया होता कि forget about this. Suppose आपसे ही बोला गया होता कि भाई यहां से यहां तक का डिफॉर्मेशन है y, फाइंड आउट y. क्या पूछा गया आपसे? डिफॉर्मेशन ऑफ दैट पोजीशन वेयर v is maximum. Write down the answer in the comment box first, and write down as a question also. Find out y, or find out deformation in the spring where v is maximum. I'm asking you to find the value of y. Only one response. तो इतना परेशान क्या हो रहे भाई? कितनी इजी चीज मैंने आपसे पूछी है. मैंने आपसे बोला है कि व्हाट इज 3? 3 is mg. What is this 3? This 3 is k into y. स्प्रिंग फोर्स. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जहां पर v मैक्सिमम हो, जहां v मैक्सिमम होगा वहां टोटल फोर्स क्या होगा? 0. इसका मतलब आप क्या बोल रहे हो? 3 is 3, ky is mg, ky is mg. This gives you y as mg upon k. So this is the place where speed of the object is maximum. Write down this. Now, hopefully यहाँ तक की गाली समझ में आ गई होगी. अब let's find out the position x, जहां पर अपना
ऑब्जेक्ट इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर है. This mg upon k is the place where net force is zero, and over here speed of the object is maximum. अब जो चीज करेंगे अपन वो अप्रोच आपके लिए बहुत काम की है. देखना. Look here. यहां से शुरू हुई थी कहानी, which is natural length, और यहां पर खत्म करनी है अपने को. This much is x. Now I told you that, look carefully, बहुत काम के पार्ट आएंगे, एनर्जी एंड ऑल से रिलेटेड चीजें आएंगी. मैंने आपसे बोला कि कितने फोर्सेस लग रहे हैं इस ऑब्जेक्ट पर, क्या क्या फोर्स प्रेजेंट है. एक तो है mg, तो ये मूव करेगा, एक mg है, और दूसरा है kx. kx मीन्स स्प्रिंग फोर्स, नॉट दिस x, कोई भी x. kx का मतलब किसी भी अलग अलग पोजीशन पर जो आ रहा है. There are two forces acting on the body, mg and kx. सीखते जाना. हमारे पास पहला स्टेटमेंट है, वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस, इट डज व्हाट? डेल्टा k. This is the starting point, I. This is the last point, end point, F. What is delta K? Write down fast in the comment box. What is delta K between this point and this point? Write down in the comment box as fast as you can. आपके रिस्पॉन्स से मुझे आइडिया लगता है कि आप एक्टिवली बैठे हैं या फिर सो रहे हैं. गुड. क्वेश्चन किया था हमने, ऑब्जेक्ट को रेस्ट से रिलीज किया था. यू ड्रॉप्ड इट एंड देन अल्टीमेटली एट द लोएस्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट इज अगेन एट रेस्ट, एंड वी नो दैट दीज रेस्ट्स आर बोथ इंस्टेंटेनियस रेस्ट्स. The moment you drop it, starts coming down. लेकिन हमें मतलब नहीं कि किस तरह का रेस्ट है. डेल्टा का मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. कैपिटल K फॉर काइनेटिक एनर्जी शॉर्ट में. फाइनली जीरो, इनिशियली जीरो. Now work done by all, इसका मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी. और अच्छे से क्लियर हो जाए, ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स. केवल दो फोर्स काम कर रहे हैं, ग्रेविटी एंड स्प्रिंग, और राइट साइड बोल रही है कितना है? जीरो. अब ग्रेविटी का वर्क फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, लेट मी सी हाउ फास्ट यू आर. आज की पूरी क्लास में एक ही क्वेश्चन होगा, लेकिन ये क्वेश्चन इतना अच्छा है कि आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही हैं. डू रिस्पॉन्ड. What is the work of gravity? Write down this in the comment box. Starting from this point to this point, your displacement is x. What is work done by gravity? First,
गुड। किसकी बात हो रही है? mg। वर्क का फॉर्मूला क्या है भाई? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos ऑफ 0। mg मल्टीप्लाइड बाय x। mg कहां लग रहा है? थ्रू आउट, नीचे की तरफ। डिस्प्लेसमेंट भी कहां है? नीचे की तरफ। दोनों के बीच का एंगल क्या है? 0। सही आंसर दिया लोगों ने mgx प्लस स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स का वर्क क्या होगा? स्प्रिंग फोर्स कितना है भाई? kx। डिस्प्लेसमेंट कितना है? x। kx कहां लग रहा है? ऊपर। डिस्प्लेसमेंट कहां है? नीचे। दोनों के बीच का एंगल कितना है? cos ऑफ 180। ये जो चीज आई, दिस इज वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, यहां 0 था, दिस इज 180। Do you understand this work done by a spring force? Yes or no? Write down fast in the comment box. Well, that's what I expected from you. Everybody is writing yes, but this is not correct. This is correct. This is not. Now, who will tell me what is wrong with this? You will write down like this, you'll make a cross, and then once I tell you, you'll write down the reason also. What went wrong with this? What is wrong with this? Who can tell me? Good, that's the answer. First answer and the correct answer. Force into displacement, ये अप्रोच कब काम करती है? When force is uniform. Spring force is continuously changing and therefore we cannot. We'll have to use integration. So write down the reason behind the cross. Note down this, make a cross, now write down the reason. W equals to F dot S. W equals to F dot S is used when force is constant, uniform. But since spring force is a variable force, we cannot use it. We cannot use W equals to F dot S. But since spring force is a variable force, we cannot use W equals to F dot S. तो जब ये नहीं कर सकते तब क्या करेंगे? अब वहां चलते हैं. Let's find out work done by the spring force. ये नोट हो गया होगा. We're trying to find work done by the spring force. कैसे करेंगे? यहां देखना. And just believe me, in the end, this question, it just requires only 5 seconds. So everything which we are doing is just for you to understand the way force, work and all should be taken care of. Question solve करने के लिए केवल 5 seconds चाहिए, and we'll see that in the end. यहाँ पर
We need to find work done by the spring force. We cannot find it directly. जब भी नॉन यूनिफॉर्म होती है चीजें हम dw के पास जाते हैं. What is dw? dw is f dot ds. f dot ds. And then इसको हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट f dot ds को. इस तरह से काम चलता है. What is f dot ds? उसको यहां देखना. Just don't worry about this x. You can always write it as x naught. It's a specific value जिस पे अपन इंटरेस्टेड हैं. x लगातार चेंज हो रहा है. 1 2 सपोज x naught आ रहा है 8, तो अपना x लगातार चेंज हो रहा है. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो अपना एम x naught फाइंड करना. You can also write it like this x naught. अब f dot ds को किस तरह से डेवलप करते हैं वहां चलते हैं. होपफुली यहां तक की कहानी बन गई होगी. ये चीज याद रखना. बाद में हम फिर से इसको पिक करेंगे and I will directly put all the values. Let me show you how do we calculate this. और फास्ट करेंगे क्योंकि आपने इन सारी चीजों को एक बार देखा हुआ है. कहां देखा हुआ है? जब मैं बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा. हम सारी की सारी कैलकुलेशन को इस लाइन के साथ लिंक करेंगे बाद में. देखना रहेगा. जो स्प्रिंग है अपनी यहां पर है. दिस वॉज नेचुरल लेंथ. होपफुली दिख रहा है. दिस इज नेचुरल लेंथ. इस जगह पर स्प्रिंग फोर्स कितना है? kx. एंड देन क्या करते हैं अपन, जो कि बहुत ज्यादा नहीं करना है समझने के लिए आपके. स्प्रिंग को यहां से यहां तक लाने के बाद आपने क्या किया? आपने यहां से यहां तक कितना डिफॉर्म किया? dx. I hope you can see this blue. Blue इसलिए दिखा है कि डिफरेंशिएट कर सको फोर्स और इसके बीच में. स्प्रिंग ये नेचुरल लेंथ पर थी. यहां तक डिफॉर्मेशन हो गया है x. जब x डिफॉर्मेशन है तो फोर्स है kx. दिस इज यूज ऑफ इंटीग्रेशन. पहले भी कई बार कर चुके हैं. धीरे धीरे इसकी आदत बनेगी. फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन हमने बॉडी को कितना डिस्प्लेस किया? बहुत छोटा सा. दिस dx is your ds. Now how do you open this? देखते जाना. मैग्नीट्यूड ऑफ f कितना है भाई? kx. मैग्नीट्यूड ऑफ ds कितना है? dx. What is the angle between these two? 180 degrees. फिर से मैग्नीट्यूड cos of angle between this. और हम कहां से चलना शुरू किया था? हमने चलना शुरू किया था from x equals to 0, which is called lower limit, to x equals to x naught. From this to this. यहां पर हमारा x कितना है? 0. और यहां पर हमारा x कितना हो गया है? x naught. इंटीग्रेशन को बताना पड़ता है कि भाई यहां से यहां तक. अब थोड़ा फास्ट काम कर लेते भाई. इतना बनता होगा. cos 180 हर आदमी को पता है क्या होता है? -1. टाइम सेव करते हैं. हाँ भाई, हमने क्या क्या किया है? फोर्स, मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच का एंगल cos 180. स्टार्टिंग कहां से की थी? एंड कहां पर किया? दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट, अपर लिमिट. इंटीग्रेशन फास्ट करते हैं भाई. cos 180 is -1, बाहर रखो. k is a constant, बाहर रखो. x का इंटीग्रेशन हर आदमी को पता है. x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x square by 2. then limits कहां से? let's find out fast. लोअर लिमिट कितनी है? 0. अपर लिमिट कितनी है? x naught.
अब how do you put limits? k by 2 out, x की जगह पर अपर लिमिट x नॉट माइनस x की जगह लोअर लिमिट 0. अपर लिमिट minus lower limit x naught minus 0. 0 is gone and you get what? Minus of half k x naught square. क्या निकला है ये? This is work done by the spring force. थोड़ा फास्ट कर लेते हैं. इसकी कहाँ जरूरत पड़ रही थी? Now remember the last line जो थोड़ी देर पहले हमने इरेज की थी, उसमें हमारे पास क्या क्या था? वर्क डन बाय mg. वर्क डन बाय mg कितना था? mg इंटू एक्स नॉट. अब वहां जाकर उस x को x नॉट कर लेना. हमने क्या क्या लिखा था? mg x cos 0, उसको x नॉट कर लेना. एंड व्हाट इज cos 0? 1. देन स्प्रिंग फोर्स का वर्क जो हमने पहले गलत तरीके से निकाला था. नाउ दिस इज द करेक्ट प्रोसीजर. दिस इज कमिंग माइनस ऑफ हाफ k x naught square and what was the right hand side? Delta k, which is 0. Done. X naught and x naught cancel, square in this. Simplify and you get your x naught as 2mg divided by k. इसमें उतनी दम नहीं है जो चीज इसको डेवलप करने में थी. So I'm asking you, do you understand the development of minus half k x naught square? Yes or no? Do you understand this integration, negative sign, putting limits and all? Write down fast in the comment box. क्योंकि पूरा लेक्चर इसी चीज को समझाने के लिए है. जल्दी से इसको नोट करो एंड देन विल सी द शॉर्टकट वर्जन. अब इधर ये सब करने के बाद now you can see if you want to calculate, if you have to calculate work done by a variable force, तो ये सारा का सारा इंटीग्रेशन डेवलप करना होता है. इसके बाद हमने बोला कि नहीं, हम ये सब नहीं करना चाहते. Instead of doing this whole calculation work this way, हमने इस चीज को करने के लिए ये सेकंड अप्रोच डेवलप की. सेकंड मेथड केयरफुली देखना, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछना. अभी हमने क्या बोलना शुरू किया? हमने बोला क्या क्या फोर्स लग रहे थे भाई? mg. एक काम करो, इसको इंटरनल बना दो. बहुत अच्छी बात. दूसरा कौन लग रहा है? kx. इसको भी क्या बना दो? इंटरनल. What do you mean by internal? इंटरनल मतलब अगर आपने mg को इंटरनल बना दिया तो अब आप इसका वर्क यूज नहीं करोगे, आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी यूज करोगे. U फॉर पोटेंशियल एनर्जी.
अगर आपने किसी फोर्स को इंटरनल बना दिया, इसका वर्क काउंट नहीं करना है। क्या काउंट करनी है? पोटेंशियल एनर्जी। kx को क्या बना दिया? इंटरनल। इसका भी वर्क काउंट नहीं करना है। इसके लिए भी क्या यूज करनी है? पोटेंशियल एनर्जी। ये अपन कर चुके हैं भाई कि अगर इंटरनल का वर्क है तो साइड चेंज एंड ऑल, वी हैव ऑलरेडी डन दिस थिंग। अब तो यार दो तो फोर्स थे इस पर, एक कौन था? mg और दूसरा कौन था? kx। और दोनों को आपने क्या बोला कि इनका वर्क काउंट नहीं होगा। इसका मतलब अब इस सिस्टम पर वर्क करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। W external is what? 0। कोई है ही नहीं। जो आदमी पकड़ा हुआ था वो छोड़ के चला गया, गॉन। उसने यहां छोड़ दिया। उसके बाद कौन कौन थे? mg और kx। ये दोनों क्या बोल रहे हैं कि हमारा वर्क काउंट मत करना, उसकी जगह क्या काउंट करना? पोटेंशियल एनर्जी। दैट मींस W external is 0. What does it mean? If W external is 0, then what is that which we use? Write down its short form fast in the comment box. Fast. If W external is 0, हम किसी एक चीज को पसंद करते हैं। Good. COME. Conservation of mechanical energy. कब? जब W external क्या है? 0। कैसे यूज करते हैं उसको देखना। K for kinetic energy initial plus U. अब U, there are two types of energies, gravity and spring. तो अपन ने बोल दिया U for gravity, U gravity initial। इसको डिकोड कर लेना। स्प्रिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। एक और है स्प्रिंग फोर्स। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल स्प्रिंग फोर्स पोटेंशियल एनर्जी, एंड देन इन सबके फाइनल काउंटर पार्ट। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ये इधर लिख दिया अपन ने। यहां पर सपोज अब ये चीज भी और इसको डेवलप करेंगे। मैंने बोला कि यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो वो ग्राउंड लेवल है, अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटेशनल एनर्जी कितनी होती है? 0। अगर अर्थ की सरफेस पर 0 होती है तो उससे h हाइट पर कितनी होती है? mgh। यहां आ जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। देखते जाना भाई। इनिशियली आप यहां हो, आप यहां पर हो, ग्राउंड से कितना ऊपर हो आप? x नॉट। तो फिर आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? mgh। व्हाट इज h? x नॉट। केयरफुली देखना। हमने बोला यहां पर अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। तो उससे h हाइट पर mgh। व्हाट इज दिस हाइट? x नॉट। दिस इज कमिंग mgx नॉट। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होपफुली आपको याद होगा, नेचुरल लेंथ पर स्प्रिंग एनर्जी कितनी होती है? 0। फाइनल वैल्यूज। फाइनली यहां से आप नीचे आ गए। जब आप यहां पर हैं फाइनल पॉइंट पर, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 0। ग्रेविटेशनल कितनी है यहां पर? ये रही, कितनी है? 0। अगर स्प्रिंग x नॉट डिफॉर्म्ड है तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है?
हाफ के डिफॉर्मेशन स्क्वायर। ये सब समझाना था, करने की कहानी ये रही एक लाइन की। इफ इट्स एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपने क्या किया हुआ है, एम जी एक्स नॉट इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, जो यहां पर आया था थोड़ी देर पहले। देयर इज नो नीड ऑफ एनी इंटीग्रेशन, नो नीड ऑफ पुटिंग लिमिट्स एंड ऑल, के एक्स टी एक्स सब सोचना कुछ नहीं, पूरा का पूरा पार्ट एनर्जी वाइज एंड क्वेश्चन इज डन। x naught cancelled and your x naught is coming 2 mg divided by k. If you understand this, then write down yes in the comment box. I will take 1 minute more to explain a simple thing. Just take a screenshot of this. Hopefully ना समझ में आ गया होगा, नोट भी कर लिया। इधर देखना फास्ट। इस पूरे लेक्चर का एम इस लास्ट चीज को भी समझाना था, इसलिए देखना। तो जिस फोर्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव द आइडिया ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, आप उसका वर्क मत कैलकुलेट करो, क्योंकि वर्क कैलकुलेट करने में आपने देखा स्प्रिंग फोर्स का वर्क कैलकुलेट करना मतलब क्या, इंटीग्रेशन। उसकी जगह हमने पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन को यूज किया ना। मैंने बोला कि यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है। दिस इज समथिंग फॉर दिस, जस्ट लुक हियर। अगर कोई आदमी बोले कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहां पर 0 है, ठीक, h हाइट पर कितनी होगी, mgh, h डेप्थ पर कितनी होगी, -mgh। And if you wish, you can see the potential energy version, जहां पर हमने U final minus U initial करके डेवलप किया था। अभी के लिए याद रखना, आपकी मर्जी है, आपने बोला यहां 0, जहां 0 उसके h ऊपर क्या होती है, mgh, उसके h नीचे क्या होती है, -mgh। पोटेंशियल एनर्जी की कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मर्जी, आपसे कुछ भी ले लो। आप यहां 0, आप यहां 100 भी ले सकते हो, आप यहां 10,000 भी ले सकते हो, इट डजंट मैटर। एंड जस्ट इस पॉइंट को समझाने के लिए आई एम यूजिंग द लास्ट लाइन। एक आदमी ने बोला कि भाई यहां पर 0 है, एंड ही राइट्स दिस इक्वेशन। एक दूसरा आदमी आया, उसने बोला नहीं, मैं यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 लूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आदमी यहां 0 लेगा उसके लिए यहां पर कंफ्यूजन ना हो, ये ब्लू में है, ये पहले वाले आदमी का था। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो आदमी यहां पर 0 लेगा, वो आदमी अब इस जगह पर, कहां पर, x डेप्थ पर कितनी लेगा, इस जगह पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी at this level it will be what, minus of mgx naught। जस्ट इस पार्ट को याद रखना। एक आदमी ने यहां 0 ली थी, जो आदमी यहां 0 लेगा, फर्स्ट जो आदमी यहां पर 0 ले रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसने यहां पर कितना लिया हुआ था, इस जगह पर mgx naught। जो आदमी यहां पर 0 लेगा वो h डेप्थ पर क्या लेगा, -mg। क्या इससे हमारे आंसर पर असर पड़ेगा, चेक करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितनी है, 0, ओवर हियर कितनी है, 0, नीचे आए नहीं, इस जगह पर ग्रेविटेशनल एनर्जी कितनी है, कितनी ली हुई है, 0। नेचुरल लेंथ पर स्प्रिंग एनर्जी कितनी होती है, 0। जब आप फाइनली लोएस्ट पॉइंट पर हैं,
काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। जब आप यहां पर हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी लेनी है, माइनस ऑफ mgx0। जब आप x डिफॉर्म हो गए हैं तब स्प्रिंग एनर्जी कितनी लेनी है, हाफ kx0 स्क्वायर। एक आदमी ये ब्लू इक्वेशन नोट करता है, दूसरा आदमी ये ब्लैक, लेकिन गौर से देखो दोनों सेम है। मूव दिस forward over here and it becomes what, mgx0. So it doesn't matter if somebody says that he will take potential energy 0 over here, then he has to take potential energy as mgx0. But if somebody decides to take potential energy 0 over here, then at a depth of h, it will become what, minus mgx0. So it doesn't matter what is value of potential energy. What matters is difference. तो डिफरेंस होता है वो काम का होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू का कोई मतलब नहीं हुआ करता है। एंड आई होप यू कैन सी कि बोथ वेज यू आर गेटिंग सेम रिजल्ट। होपफुली चीज क्लियर हुई होगी, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा तो स्प्रिंग फोर्स पे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे बाद में, चीजें और क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।